All right, so Aliha Iftikhar has a question, and she is asking, being fresh graduates and seeking for jobs, which company should we prefer to start our career? All right, so Alia, देखें, कोई कंपनी बड़ी या छोटी नहीं होती है। इतना मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपनी से आप स्टार्ट करेंगे अपना करियर, एवरी कंपनी विल टीच यू अ लॉट। सो हमारा एक माइंडसेट है कि हम टॉप 10 कंपनीज या टॉप 20 कंपनीज में ही अगर हायर होंगे तो हमारा करियर बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑल दी अदर कंपनीज, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि देर आर ऑलमोस्ट 750 फार्मास्यूटिकल कंपनीज दैट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, एंड नॉट जस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स, वी हैव एपीआई मैन्युफैक्चरर्स, वी हैव रीपैकेजर्स। बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं जो कि फार्मासिस्ट को हायर करती हैं। So to have any companies in the mind कि यार यही right company है हमारे लिए, तो ये point of view सही नहीं है। Starting your career from a pharmaceutical company, वो कोई भी हो, कैसी भी हो, आपको ये जरूर देखना है कि आपकी learning process क्या है, आप क्या सीख रहे हैं वहां से और कितना सीख रहे हैं वहां से। अगर आपकी पर्सनल नॉलेज वहां पर स्टेगनेंट है, काम करने के बाद आपको नहीं समझ आता है, देन दैट इज अ टाइम व्हेन यू थिंक ऑफ स्विचिंग। बट कोई भी कंपनी बड़ी या छोटी नहीं होती है, हर कंपनी आपको कुछ ना कुछ कभी ना कभी सिखाती है हर डिपार्टमेंट के अंदर। एंड सिंस आई टोल्ड यू दैट फार्मास्यूटिकल कंपनी इज अ हाईली रेगुलेटेड कंपनी, इसीलिए हम वो ही रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जो ड्राफ्ट हमारे सामने लेकर आता है। तो एवरी कंपनी is bound to follow these rules and regulations. So there is no big or small pharmaceutical companies. Every company is equal in terms of providing the best quality, safety, and efficacious products. I hope I've answered your question. All right, Asha Sheikh has a question. She says, kindly share some frequently asked questions. Okay. Adil Ahmed has a question. Can you give an example which job pharmacist should not join in? Okay, so uh, not join in is a question which I think it's not the right question, maybe, because every job here is the right job, I guess. As a pharmacist, हमारे लिए एक इंडस्ट्री की जॉब उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक क्लिनिकल जॉब है। हमारे लिए हॉस्पिटल जॉब भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की जॉब है। सो देर इज नो रॉन्ग जॉब फॉर अ फार्मासिस्ट। एक बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे लिए कि फार्मासिस्ट जो है वो रिकग्नाइज नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इनफैक्ट ऐसा नहीं है। अगर आप अपना स्कोप एक्सप्लोर करने निकलेंगे, इफ यू सी कि फार्मासिस्ट की कहाँ कहाँ जरूरत है, यू सी द फार्मासिस्ट are not just in the industry, but you'll find them in hospital, you'll find them in clinics, you'll find them in community pharmacy, you'll find them in doing welfare job. So from my perspective, I don't think there is any job that you could not join in. हमारे पास बहुत वाइड स्कोप है, बहुत वाइड हराइजन है एज अ फार्मासिस्ट जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइबा खालिद का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम मैम, इज मार्केटिंग a suitable job for a girl in Pakistan? बिल्कुल जी जनाब, ये कॉन्सेप्ट प्लीज अपने माइंड से निकाल दें कि कोई भी जॉब लड़कियों के लिए सूटेबल नहीं है। लड़कियां सारी जॉब्स कर सकती हैं, वो मार्केटिंग की हो, वो प्रोडक्शन की हो, वो क्वालिटी की हो। लड़कियां उतना ही अच्छा काम कर सकती हैं जितना मेल्स करते हैं। And I can vouch for it because me being a female, I have been working in the industry for almost 8 years now, and I can tell you that as a female, there's a huge female base in pharmaceutical industry आपको मिलेगी। So ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केटिंग लड़कियां काम नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल काम कर सकती हैं, बहुत डायनामिक फील्ड है, and I think you all should explore it as well. All right. Alia Iftikhar का next question है, मैम but protocols are different, they're like he learned more in big companies. No, no, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कंपनी आपको उतना ही सिखाती है, उसी तरीके से सिखाती है। देखिए, एक एमएनसी आपको अकॉर्डिंग टू जीएमपी चलना सिखाएगी, ठीक है, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द पेपर्स। बट एक
फर्म एक लोकल फर्म जो कि अभी स्टैब्लिश्ड मोड में जा रही है, एस्टैब्लिशिंग फर्म की तरफ जा रही है, बनना चाह रही है, स्टैब्लिश होना चाह रही है, आप ये सोचे एज अ पर्सन हाउ मच विल देयर बी फॉर यू टू लर्न। आपके लिए कितना बड़ा विंडो होगा चीजों को सीखने का, ब्लंडर्स के थ्रू सीखने का, न्यू एसओपीज बनेंगी, यू विल हैव सेंस ऑफ ओनरशिप। आपको ओनरशिप मिलेगी कि आप न्यू प्रोजेक्ट्स खुद से स्टार्ट कर सकें। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो एज अ फ्रेश ग्रेजुएट आई थिंक यू शुड गो फॉर फॉर्म विच आर स्टिल इन द एस्टैब्लिशिंग मोड, क्योंकि उस वक्त वो खुद बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई थिंक you will learn more than already established firm. All right. The next question is Elia Batul has said that thank you for the session that was productive. Being fresh graduate and having internship experience in hospital pharmacy, would be considered for pharmaceutical industry? Oh yes. अगर आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, आई कैन वाउच दैट बहुत सारे हमारे पास ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी से इंडस्ट्री की तरफ स्विच कर चुके हैं, एंड दे डूइंग रियली वेल। इंशाल्लाह हम ऐसे बहुत सारे गेस्ट स्पीकर्स को इनवाइट करेंगे यहाँ पर, जो कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिनके पास हॉस्पिटल फार्मेसी का ना 1 साल का नहीं बल्कि 3-4 सालों का एक्सपीरियंस था, और दे आर नाउ वर्किंग इन इंडस्ट्री। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल हॉस्पिटल फार्मेसी से स्विच कर सकते हैं, बट अगर आप मुझसे पूछें तो स्विच करने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल फार्मेसी में अगर आप हैं तो हॉस्पिटल फार्मेसी itself is a very prestigious job, and this will help you, as I said in the beginning, कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है अगर आप बाहर मूव करना चाहते हैं, स्पेशली if you see your career outside of Pakistan. So hospital pharmacy and clinical pharmacy is the right choice because they are preferred, they are accepted, and hospital pharmacy and clinical pharmacy का बहुत जबरदस्त scope है outside of Pakistan as well. All right. Mohammed has a question. He says, how to get the first job, as in where should we apply? Does LinkedIn? Oh yes, LinkedIn helps. बट देखिए लिंक्डइन तब हेल्प करता है जब आपकी प्रोफाइल अप टू डेट होती है। अगर आपकी प्रोफाइल देखिए, थोड़ी सी चीजें हैं जो कि आपको पर्सनल लेवल पे भी डेवलप करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, कौन सी पिक्चर आप लगा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमें लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात है, बट रिक्रूटर sees, reads your profile, and then they contact you. Right picture, even the right profile picture helps a lot. So the right description, what you want, आपने कैटेगराइज करना है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट है, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बताएं, सेकंड प्रायोरिटी बताएं, and LinkedIn helps you to reach out to the right recruiter as well. So yes, LinkedIn is one of the place that you can reach out to. There are a lot of Facebook pages who are offering jobs. वो आपको कर सकती हैं। अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं तो यूनिवर्सिटीज जॉब फेयर करवा रही हैं, वहां कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अपनी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर उन्होंने करियर्स का जो है वो पेज बनाया हुआ है, थ्रू दैट यू कैन अप्लाई। और आप जो है वो वहां पर उनकी ईमेल एड्रेसेस भी दी हुई होती हैं, आप वहां पर भी डाल सकते हैं अपनी सीवीज को। देखिए जॉब अप्लाई करना ना एक बड़ा परसिस्टेंट मामला है, ठीक है। अगर आप परसिस्टेंट नहीं हैं, अगर आप कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को नहीं देख रहे हैं, अगर कहीं ना कहीं आपका फ्लो टूट जाता है, तो डेफिनेटली देखें यू नीड टू बी आउट देयर एवरी ऑल द टाइम। सो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप ना सिर्फ लिंक्डइन पे अप्लाई करें, आप कंपनीज की वेबसाइट्स को विजिट करें, आप डिफरेंट फोरम्स को ज्वाइन करें ऑन व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि अपनी जॉब पोस्ट करती हैं थ्रू दी सोशल वेबसाइट्स। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मिस एलिया बतूल सेज दैट मिस आलिया Iftikhar says, okay ma'am, I got it, thank you, kindly guide us some tips to keep in mind during answer the interviewing questions. Okay जी। So सबसे पहले तो प्लीज माइंड में ये रखें कि आप जिस डिपार्टमेंट को चूज करना चाहते हैं आप उसी का इंटरव्यू देने जाएं, बिकॉज
अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार बस इंडस्ट्री में घुसना है, कुछ भी करके किसी भी डिपार्टमेंट में यार घुस जाओ बस, तो प्लीज ये माइंडसेट खत्म कर दें, क्योंकि आप अपने करियर के साथ खेल रहे हैं। कुछ अरसे के बाद आपको रियलाइज होगा यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर द डिपार्टमेंट. In that way you will be taking away an opportunity from the person who was determined to be on that position. So खुदारा प्लीज इस चीज को माइंड में रखें कि सबसे पहले तो आप ये माइंड बनाएं कि आपको जाना कहाँ है, क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए एंथुजियास्टिक है ना, तो आप तभी उस चीज के लिए जिसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आप दिल से परफॉर्म करते हैं. ठीक है जी. सो एलिया, टू आंसर योर क्वेश्चन, सबसे पहले तो यू नीड टू नो दैट यू वांट दिस जॉब एंड यू आर द राइट पर्सन फॉर इट. सेकेंडली, आपको अगर रिक्रूटर कोई क्वेश्चन पूछता है, अगर वट एवर द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग, जवाब आता है तो कॉन्फिडेंटली दीजिए, नहीं आता है तो एक्सक्यूज कर लीजिए, क्योंकि your wrong question can have a very negative impact on the recruiter, since we don't expect, as I said, we don't expect you to have a spot on knowledge or a technical knowledge, or you're bringing a technical knowledge to us. What we see is the right confidence and the honesty, कि आप क्या क्या लेकर आ रहे हैं टेबल पे, एंड हाउ वेल विल यू बी परफॉर्मिंग in your career, in your tenure with the company. I hope I've answered your question. I will be taking a few more questions. I'd be happy to answer a few more questions if you have any. ऑलराइट एलिया, आपका क्वेश्चन है कि आपने क्यूसी क्यूए प्रोडक्शन में काम किया और बाकी डिपार्टमेंट्स का आपको एक्सपोजर नहीं है. जिस तरीके से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि वील बी ऑफरिंग यू specific courses, inshallah, right after Ramzan we'll be opening our session with respect to these courses, and हम आपको in detail explain करेंगे कि बाकी departments हैं क्या, and हम उन department से specific आपको ये भी बताएंगे कि interviewer आपसे क्या पूछ सकता है और आपको किस चीज की हैंड्स ऑन नॉलेज होना जरूरी है. वी विल बी फर्दर गाइडिंग यू इन दोज कोर्सेज कि आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, कितनी नॉलेज आपके लिए जरूरी है, एंड स्पेसिफिक टू दोज कोर्सेज वील बी इनवाइटिंग गेस्ट स्पीकर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड इनसाइट्स. Alright, Muhammad का question है, which department in pharma industry requires going out and communicating with people other than marketing? Okay. देखिए मोहम्मद, आपको मैं ये बता दूं कि हर डिपार्टमेंट में आपको किसी ना किसी से बात तो करनी पड़ेगी. सो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो थोड़ा सा अपने आप को आउटगोइंग सा बनाएं, कॉन्फिडेंट बनाएं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट पे इंटरेक्शन जरूरी है. वो प्रोडक्शन लेवल पे हो, वो क्वालिटी के लेवल पे हो, वो मार्केटिंग के लेवल पे हो, वो रेगुलेटरी में हो, वो बिजनेस डेवलपमेंट में हो, हर जगह आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है बच्चे. आप इंट्रा डिपार्टमेंटल हो या इंटर डिपार्टमेंटल हो या आउटसाइड ऑफ द कंपनी हो, आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है. सो आपके लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से लिंक्ड है. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग या सेल्स का ही एक बंदा है जो कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर डिपार्टमेंट के अंदर एक प्रॉपर एक्सपोजर होता है. आपको कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं तो कंपनी आपको सेमिनार्स में लेके जाती है, आपको सेशंस में लेके जाती है, आपकी ट्रेनिंग करवाती है, तो इस तरीके से तो आपको भी एक्सपोजर होगा. सो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको ऑन पॉइंट होनी चाहिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो. लाइबा खालिद का क्वेश्चन है, मैम इफ आई प्लान टू मूविंग अब्रॉड इन नियर फ्यूचर व्हिच डिपार्टमेंट शुड आई गो फॉर, सो माय एक्सपीरियंस हियर विल काउंट. जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का बहुत वाइड स्कोप है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, बट अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री के अंदर भी आपके पास रेगुलेटरी अफेयर्स है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको हम एनपीडी कहते हैं वो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है, क्वालिटी का डिपार्टमेंट है. ये सारे वो एक्सपीरियंसेस हैं जो कि बाहर भी काउंट करते हैं और बाहर भी इनका बहुत वाइड स्कोप है. बट एट द सेम टाइम जब आप बाहर मूव करते हैं तो डेफिनेटली हर कंट्री की अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, अपने जीएमपी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स होते हैं. सो किसी भी कंट्री में अगर आप मूव करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, यू नीड टू बी वेरी साउंड ऑन देयर GMP guidelines, on their rules and regulations, on their protocols in order to apply there and in order to work there.
All right. If there are no more questions, we shall be winding up our session here. I hope this session has helped you, if not a lot, but in some way, because हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे fresh graduates जो हैं वो अच्छी जगह and the right place. It's very important for the fresh graduates to have the right place, to be on the right place. Yes, so Soha, we'll be providing you with the recordings. We have recorded both the sessions. The first session and the second session, we'll be providing you with the recordings as well. Please stay tuned on the group. We shall be opening the group chat as well so that you can provide with your feedback and what else do you require from this these sessions. आपका feedback बहुत important है हमारे लिए. अगर आप अपना feedback देंगे तो ही हम अपने sessions को, अपने courses को और बेहतर बना सकेंगे. Thank you so much, all of you, to join us, and I hope this session has helped you in one way or the other. Thank you so much, and Allah Hafiz.